ये हमारी अनाउंसमेंट है कि ये जो हमारा ऐलान है। ये हमारा ऐलान है। ऐलान है। बहुत अच्छा जी। ऐलान है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान भी है कि हम इस सारे आप ये दौरानिये में हम उर्दू कितनी बोलते हैं। अंग्रेजी इसको कितनी तो बोलते हैं? सजा भी मिलनी चाहिए जो उर्दू नहीं बोलेगा। जिशान भाई ऐलान कहते हैं, अनाउंसमेंट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐलान जरूरी ऐलान। अभी आते छूटेगी नहीं। जैसे उर्दू तो लश्करी जुबान है, उर्दू तो लश्करी जुबान है, तो हम बाकी भी अडॉप्ट कर लेते हैं। वी आर ओपन टू ऑल। तस्हीह करने का शुक्रिया। मेरा ख्याल है मोहसिन शुरू कीजिए क्योंकि Really quickly, Zishan, I can't read Urdu, so what does that say in Urdu? ये लिखा है जरूरी ऐलान, गुफ्तगू सिर्फ उर्दू में की जाएगी। Oh God, okay, I'm going to struggle, but I'll be fine. सही, एक मिनट से मैं कुछ लोग और भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं इनको। नम्रा, आप लिंक प्लीज शेयर कर दीजिएगा सब जगहों पे कि बाकी जिन लोगों ने ज्वाइन करना है। जिया भी ज्वाइन कर रहे हैं। जी जिया आ चुके हैं। श्योर मैं इसको लिंक को मैं फॉरवर्ड कर चुकी हूँ और भी प्लेटफॉर्म्स पे। मैंने आपको एक मैसेज भी लेफ्ट किया है डीएम पे, सो इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन हैव अ लुक एट इट। हाँ जी। मोहसिन, बाज़ाब्ता इफ्तिताह करते हैं। जी जी, बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया जा सकता है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम शहबाज है, मैंने शिकागो से ज्वाइन किया आपको। बहुत शुक्रिया शहबाज। खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिस तरह कुछ लोग जिनको उर्दू का आइडिया नहीं है लिखने, पढ़ने या सुनने के लिहाज से, तो उनके लिए ये सामने ऐलान जो है, ऐलान इज अनाउंसमेंट दैट ओके कि हम लोग स्टार्ट जो इसका है इस पूरे दौरानिये में हम लोग उर्दू बोलेंगे, सिर्फ उर्दू बोलेंगे। इसके बाद हम एक सवाल जवाब का एक टाइम रखेंगे, एक वक्त रखेंगे जिसमें ज़िया मलिक और आबिद कुरैशी वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी हम उनकी राय भी लेंगे कि इसमें नई स्क्रम गाइड के अंदर जो जितनी तब्दीलियाँ वगैरह हुई। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक सब लोगों को, पाकिस्तान की सब जितने भी लोग हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत से काम हम लोग करना चाह रहे थे और थैंक गॉड के शुक्र अल्लाह का अब ये एक हमारा इम्तिहान है कि हम लोग किस तरीके से इस इम्तिहान से गुजरते हैं कि इस सारे टाइम में हम किस तरह उर्दू पूरी बोल सकते हैं। तो इसको ज़रा कुछ अच्छा बनाने के लिए इस काम को हम भी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का, हमारी जिसमें ज़िशान, हसीब और आयशा हैं, सलमान हैं जो कनाडा से हैं। तो ये सिर्फ एक जगह से नहीं सब लोगों ने काम किया, इसमें डिफरेंट जगहों से लोगों ने मिलके एक टीम में काम किया। और इसमें हमारे पास ज़िशान हैं जो कि अमेरिका से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हसीब इस्लामाबाद से हैं और आयशा कराची से हैं, सलमान कनाडा से हैं, मैं लाहौर से हूँ। तो काफ़ी मिली जुली टीम है ये। और हमारा मकसद भी है कि इसकी थोड़ी सी हम आपको मकसद बता दें कि किस तरह हम लोगों ने ये सारी एक जद्दोजहद की और उसकी बेस पे, उसकी बुनियाद पे हम लोगों ने ये काम किया। ये काम स्टार्ट शुरू हुआ था इस साल के मई के महीने में। तो पूरी टीम ने पहले जी ज़िशान आप कुछ कह रहे हैं? रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया। जी हो चुकी हुई है। तो
हम लोगों ने मई में इसका स्टार्ट किया था। खता कलामी की माफ़ी, शुरू करें। जी, कोई मसला नहीं। और इस तरह मकसद सिर्फ यही था कि हम किस तरीके से पाकिस्तान का नाम मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पर अभी नहीं है वहाँ पर किस तरह लेके आ सकते हैं। और इसके लिए scrum.org जो है कंपनी, इन लोगों ने हम लोगों को काफ़ी इस मामले हमारे साथ ताउन भी किया इस सारे काम करने में। तो पिछले तकरीबन 6 माह से हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। और इसमें 6 माह से हमारा इस पे काम जारी था। और इसमें हमारे पास पहले हमने पहली स्क्रम गाइड उसको उसका तर्जुमा किया। उसके बाद मालूम हुआ कि नहीं जी, नई स्क्रम गाइड भी आ रही है, तो आप अभी ना इसको हम लोग इसको शाया करेंगे और नई स्क्रम गाइड के आने तक हम वेट करें। सो एनीवेज बड़ी मुश्किल से इस सारे तर्जुमा की वो सारा का सारा काम किया गया। हमें इस मामले में हम लोगों को एक चीज़ जो अच्छी लगी वो ये भी हुई कि हमें स्क्रम गाइड पहले मिल गई पब्लिक आपकी रिलीज़ या शाया होने से पहले। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ों का हमें पता भी चल गया। तो मैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें, लेकिन मेरे साथ मुझे देख लेने दें। कुबैर की टीम में से कोई है हमारे पास आज? Anyone from Kubair's team or Peace Through Prosperity team? चलें, कोई मसला नहीं है। उनके मतलब भी ये एक टीम भी इसके ऊपर काम कर रही थी और उन लोगों ने भी काफ़ी इसके, ये भी एक काफ़ी डिफरेंट जगहों पे लोग थे जो इस इनिशिएटिव पे काम कर रहे थे। और लेकिन किसी वजह से उनकी ये गाइड पब्लिश नहीं हो पाई। मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन लेवल का कोई इशू होगा या किसी और का भी, लेकिन हम लोगों ने उनको भी इनवाइट किया था कि क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिट काम है, इसमें कोई मकसद नहीं है कि हम किसी किस्म की बिजनेस वैल्यू को देखें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे मुल्क का नाम आएगा। तो इसलिए हम सब लोगों को इसमें खुशामदीद कहते हैं कि हमारे साथ मिलके वो इस पे काम करें। और जिन जिन लोगों ने अगर इस पे पहले भी कोई कोशिश की भी है वो भी आएँ, ताकि उनको भी इसकी मुबारकबाद दी जाए और उसकी एप्रिसिएशन की जाए। तो मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं सारी दुनिया में, उन लोगों को हम अपने साथ मिलाकर किसी एक जगह पर हम लोग सब इकट्ठे हों और मिल के काम करें। चाहे ये इस तरह का कोई इनिशिएटिव है या इस तरह का कोई और भी हमारी मुस्तकबिल में भी आए, तो उस पर भी कर सकें। यहाँ से हमें पता लग रहा है दिस इज़ वेरी हार्ड टू स्पीक उर्दू इन लाइक एंड अवॉइड इंग्लिश वर्ड्स। तो कुछ हमारे पास लोग हैं, ज़िया मलिक ने हमें ज्वाइन भी कर लिया हुआ है, और कुछ और लोग भी हैं जिनको उर्दू अगर बिल्कुल समझ नहीं आती तो शायद हम लोग कुछ इसमें मिक्सअप करें। लेकिन जी, ज़िशान और हसीब में ये दो आज मेजर हमारे स्पीकर हैं जो लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और वो हमें बताएंगे कि इसमें क्या क्या हम लोगों ने इसमें प्रोग्रेस क्या किया और किस तरीके से हम इसको लेके। तो ज़िशान एंड हसीब, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया तारुफ करवाने का। सो मैं यहाँ से आगाज़ करूँगा कि मवासलात की बहतात की ये सौगात है कि तरजीहात, तकरीबात, नफ्सियात, तरगीबात, मालूमात, हत्ता कि मुलाकात में भी मगरबी ज़बान की अलामात बरक़ात की तरफ पाई जाती हैं। इसकी जो भी वजूहात हों, मुरक्कबात की ये फ़रात हमारी रिवायात ही नहीं बल्कि तालीमात, तहकीकात, तख्लीकात, तशरीहात और ख़यालात की सफ़ात ही बदल देती हैं। इस तहमीद से ये उम्मीद है कि गुफ्तो शनीद की तायीद या तनकीद मुफीद होगी और इस तजदीद से शायद ही कोई मुस्तफ़ीद हो जाए। तो अब इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह करते हैं और इस सफ़र के दौरान जो हमारे साथ मुश्किलात पेश आई हैं और जो कुछ हमने इसके दौरान सीखा है उसको बयान करते हैं। तो ज़रूरी ऐलान आप लोगों ने देख लिया है, तारुफ आप लोगों के साथ थोड़ा सा हम लोगों का हो चुका है। ये एक मुख्तसर सी तारीख है रहनुमाई स्क्रम की। आप सब लोग जानते हैं कि इस साल स्क्रम को 25 साल हो चुके हैं और मैंने एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज देखा था कि ना अब जो है स्क्रम जो है वो गाड़ी किराए पे ले सकता है। इसको मुआयने और मुआफ़क़त के ज़रिए बेहतर किया गया है।
मुआयना और मुवाफ़क़त स्क्रम का एक बहुत ही बुनियादी जुज़ है और ये उन्होंने रहनुमाई स्क्रम में भी शामिल किया है कि किस तरह से हम मुआयने और मुवाफ़क़त के ज़रिए इस रहनुमाई स्क्रम को बेहतर से बेहतर करें। 40 से ज़्यादा ज़बानों में इसके तराजुम मौजूद हैं। पहली दफ़ा उर्दू का तर्जुमा पेश किया जा रहा है। पहली दफ़ा उर्दू का तर्जुमा रस्मी तौर पे पेश किया जा रहा है। इससे पहले उर्दू का तर्जुमा यकीनन बहुत सारे जमातों ने, बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन रस्मी तौर पे ये पहली दफ़ा पेश किया जा रहा है। इसकी थोड़ी-सी तारीख़। सबसे पहले जून 2020 में मोहसिन शहज़ाद ने ये ख़याल पेश किया था। जुलाई में एक जमात बना के उस पे काम शुरू किया। फिर स्क्रम 2017 का पहला मुसवदा तैयार किया गया। सलमान असलम और आयशा ज़मानी ने नक्काद के तौर पर उस पे राय की। फिर उसके बाद हमने लिसानी माहिरीन से उसके ज़बान पर राय ली। अब्दुल हसीब कासिम ने हम आहंगी के लिए दोबारा तर्जुमा तहरीर किया और उसके बाद अक्टूबर में अब्दुल हसीम कासिम ने 2020 के स्क्रम रहनुमाई स्क्रम पर काम शुरू कर दिया और नवंबर में ये तर्जुमा रस्मी तौर पर मंजूर कर लिया गया। यहाँ पर एक बात ज़रूरी ये बतानी है कि ये बेसिकली इसका तीसरा मुसवदा है और इसके दौरान जो हम लोगों को मुश्किलात हुई थी वो और यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर चीज़ें जो है वो तर्जुमे से मुतालिक बयान कर रहे हैं। जो मुश्किलात हुई थी वो ये कि पहला जो मुसवदा तैयार किया गया था वो इतना ज़्यादा खालिस उर्दू ज़बान में था कि वो बहुत सारे उर्दू बोलने वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर हमने जो है उसको जब हमने बिल्कुल उनकी हिसाब से तैयार किया, स्क्रम वालों के scrum.org वालों के हिसाब से तैयार किया, तो वो खासा मशीनी तर्जुमा लग रहा था। फिर तीसरे मुसवदे के तौर पे हमने कुछ इस तरह से किया कि उसमें थोड़ी सी हम आहंगी भी आ जाए, थोड़े से हम लोगों को कुछ ऐसे अल्फाज उसमें से मनसूख करने पड़े जो कि बहुत ज़्यादा आम फहम नहीं थे। यहाँ पर शुरू करने से पहले आप लोगों की एक इल्मी पड़ताल की जाती है। जिन लोगों को नहीं पता इल्मी पड़ताल, मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए अंग्रेजी में बोल देता हूँ, नॉलेज टेस्ट। प्रोडक्ट की क्या तारीफ है? आप लोग जो है यहाँ पर बातचीत के खाने में अपने जवाबात तहरीर कर सकते हैं। हम आबिद को भी खुशामदीद कहते हैं। आबिद और ज़िया हमारे पैनलिस्ट दोनों हमें जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप लोगों से ये एक थोड़ी सी नॉलेज टेस्ट या इल्मी पड़ताल है। आप चाहें तो बातचीत के खाने में अपना जवाब तहरीर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्या तारीफ है स्क्रम की रूह से। और हम इस को दिलचस्प बनाने के लिए आपके लिए कुछ मौमे पेश करते रहेंगे। हसीब के पास आपके लिए बहुत सारे मौमे हैं और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम वक्त मुअय्यन तय कर लें और हम 60 सातों से ज़्यादा वक्त जो है वो ना उस पर सर्व करें, वरना हमारा ये वेबिनार जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। अच्छा, एक वजाहत पेश कर दूं, अगर किसी को उर्दू में लिखना नहीं आता तो आप जो है वो रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं। आपके ख्याल में प्रोडक्ट क्या है? दिलचस्प बात यह है कि अभी तक स्क्रम 2017 तक प्रोडक्ट की रस्मी तारीफ मौजूद नहीं थी। तो अब पहली दफ़ा स्क्रम में प्रोडक्ट की रस्मी तारीफ पेश की गई है। असीब, आप कुछ करेंगे? मॉम में सारे आपके जिम्मे हैं, आपने जो है सारे मॉम जो है वो लोगों के लिए बनाए हैं। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कदर मुहैया करने का एक जरिया है। इसकी वाज़ेह हदूद मारूफ मुताल्लिकीन और सारिफीन है। प्रोडक्ट कोई खिदमत, मादी शय या कुछ मजीद ख्याली होता है। हमारे पास एक जवाब आया है फहादुल्लाह की तरफ से, कोई जिस्मानी या अर्जी चीज जिसे एक बयानशुदा अमल के जरिए बनाया जाए।
सो कोई भी ऐसी चीज, अगर इसको मैं दोबारा से एक दफा पढ़ूं तो कोई भी, फहद ने हमें ये बताने की कोशिश की कि कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी बयानशुदा अमल के जरिए बनाई जाए वो एक प्रोडक्ट है। बहुत बहुत इसमें शुक्रिया। इजाफा सिर्फ इस बात का है, अगर हम देखें तो तकरीबन बात यही है, लेकिन इसमें इजाफा जो है वो सिर्फ एक वो चीज है कि कदर, आपने कदर मुहैया करनी है। कदर किसको मुहैया करते हैं और कदर होती क्या है? जिशान भाई, आप कुछ बात करेंगे उसके ऊपर? कदर के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात भी करेंगे और कदर के बारे में हमारे पैनलिस्ट भी करेंगे। मैं आसान ज़बान में ये बता दूं, कदर वो है जो कि सारिफ के लिए कदर होती है। अगर हम बीच में उन लोगों के लिए जिनको उर्दू में थोड़ी मसाइल हैं, कदर मीन्स वैल्यू, और वैल्यू डिफाइंस बाय द कस्टमर। ओके, अब एक मौमा है आप लोगों के लिए। मौमा, तो मौमा हमारे पास ये आ गया कि प्रोडक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? कोशिश कीजिए। हासिल। ओके, हमारे पास पहला जवाब आया, फर्स्ट जवाब आया हमारे पास हासिल। मजीद आगे चलिए, कोई और? माल, एक और चीज, बिल्कुल, और बताइए और क्या हो सकता है? चीज, जरूरत, बिल्कुल। कोई और कोशिश करना चाहेगा बिफोर या इससे पहले कि मैं उसका जवाब दे दूं? प्रोडक्ट के लिए जो उर्दू का वर्ड है या उर्दू का लफ्ज है वो है मसनू। तो मसनू बेसिकली वो चीज है जो कि आपके यूजर्स को वैल्यू या कदर मुहैया कर रही है। मसनूआत, बिल्कुल, मसनूआत जो है वो जमा है मसनू की। सो चूंकि हमने लफ्ज पूछा था प्रोडक्ट, उसकी जमा नहीं थी, प्रोडक्ट्स नहीं था, इसलिए वो मसनू होगा। सो बिल्कुल दुरुस्त अब्दुल रशीद, बहुत शुक्रिया, आला। जी जिशान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब इसमें दिलचस्पी ले रहे होंगे और इस तरह के बहुत सारे मौलूमात आप लोगों को इसमें जो है मिलेंगे, और उम्मीद है कि कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो नई तब्दीलियां, तो यहाँ पर चीदा चीदा कुछ तब्दीलियां बयान की गई हैं। यहाँ पर मजीद और इनके इनकी कुछ तफसीलात में हम जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तफसीलात में हम लोग अपने पैनल्स के लिए जो है वो छोड़ देंगे। ज़िया और आबिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा फोकस जो है, हमारा ध्यान जो है ज़्यादातर उर्दू पर और थोड़ी सी तफसीलात बयान करने पर है। तो स्क्रम, रहनुमाई स्क्रम जो है मजीद कम लागू करने वाली है, मींस लेस प्रिस्क्रिप्टिव है। यहाँ पर मजीद आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जा रही कि आपने ये वाले तरीक़ेकार जो है यूज़ करने हैं और इस तरह इस्तेमाल करने और इस तरह से काम करना है। अब सिर्फ एक ही टीम और एक ही जमात और एक ही प्रोडक्ट पे ध्यान है। गुज़िश्ता रहनुमाई स्क्रम में अगर आप लोगों को याद हो तो वहाँ 2 जमातों का जिक्र होता था, एक स्क्रम टीम और एक डेवलपमेंट टीम। हालांकि डेवलपमेंट टीम एक रोल था, एक किरदार था, लेकिन फिर भी एक जो है लोगों के दरमियान मसला होता था कि वो कौन सी टीम के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो जो है यहाँ पर हटा के अब वो सब एक ही टीम कर दिया गया है। नया एक तस्वुर मुतारिफ कराया गया है प्रोडक्ट गोल का। स्प्रिंट गोल, मुकम्मल की तारीफ और प्रोडक्ट गोल जो है अब इनको एक ही जगह पर कर दिया गया है। गुज़िश्ता रहनुमा स्क्रम में ये मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद थे, तो अब जो है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से है। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो है मुतारिफ कराई गई है, खुद मुनज़्ज़िम की बजाय खुद मुंतज़िम किया गया है। स्प्रिंट प्लानिंग में अब एक उन्वान का इजाफा किया गया है जो हम देखेंगे, और वसी सामीन के लिए आसान ज़बान का इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक जो है सिर्फ एक खुलासा है और इसकी कुछ तफसीलात हम देखेंगे। हसीब। अच्छा, तो अब आ गया हमारा अगला मौमा। फ्रेमवर्क को उर्दू में क्या कहते हैं? जिसमें खाकी। जिसमें खाकी? नहीं। और सोचिए, कुछ और हो सकता होगा। फ्रेमवर्क की उर्दू? वैसे ढांचा। अभी किसी ने ढांचा ढांचा कहा था, सही कहा था। ढांचे का काम, बिल्कुल, ढांचा, ढांचा। ओके, लफ्जी मतलब देखें तो ठीक ढांचे हो का गया। ढांचे का काम, ओके। चलें, ज्यादा इसको मैं ड्रैग नहीं करूंगा क्योंकि हमें
मजीद उसके लिए भी चलना चाहिए। फ्रेमवर्क की जो उर्दू है वो है लाहे अमल। बहुत बहुत तो शुक्रिया। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि स्क्रम एक फ्रेमवर्क है तो स्क्रम बेसिकली एक लाहे अमल है। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब। अच्छा, एक जो चीज इस दफा मुतारिफ कराई गई है स्क्रम में पहली दफा, वो है लीन सोच। लीन के बारे में कुछ लोग पहले से जानते हैं और कुछ लोगों को कुछ इसके बारे में अंदाज़ा है कि लीन जो है ये अमली फजले को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसमें सिर्फ ज़रूरी अशिया पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और गैर ज़रूरी अशिया पे ध्यान इतना नहीं दिया जाता। अगर मैं उन लोगों के लिए जिनकी उर्दू जो है वो कोई प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब है लीन सोच, लीन थिंकिंग अमली फजला को यानी कि वेस्ट को जो है वो कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये पहली दफ़ा बाज़ाब्ता तौर पे, रस्मी तौर पे रहनुमाई इस क्रम में शामिल की गई है। हाँ जी, अगला मम्मा, ट्रांसपेरेंसी की उर्दू क्या होती है? शफाफियत। बिल्कुल शफाफ। बिल्कुल, स्पॉट ऑन, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, शफाफियत। जी निशान भाई, ये वाला तो हमने बड़ी जल्दी निकाल दिया, आपके पास वापस आ गई। अच्छा, स्क्रम टीम या स्क्रम जमात, तो यहाँ पर एक और जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि स्क्रम टीम में दर्जाबंदी नहीं होती। पहले रहनुमाई स्क्रम में ये बताया गया था कि स्क्रम टीम में ज़ेली जमात या ज़ेली टीम नहीं होती, अब उसमें एक और इजाफा किया गया है कि दर्जाबंदी नहीं होती। यहाँ दर्जाबंदी का मतलब ये है कि और मैंने ऐसा, इनफैक्ट मेरा अपना तजर्बा भी है कि अच्छी और इदारों में वहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किसी भी स्क्रम टीम में कोई भी स्क्रम का मेंबर जो है, स्क्रम का रुकन जो है, स्क्रम टीम का रुकन जो है, प्रोडक्ट ऑनर या स्क्रम मास्टर को रस्मी तौर पे रिपोर्ट ना कर रहा हो। कि अगर वहाँ दर्जाबंदी होगी तो वहाँ पर जो है वो ट्रस्ट, ओपननेस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो स्क्रम टीम के मेंबरान की तादाद अमूमन 10 या इससे कम होती है। ये एक और तब्दीली है कि गुज़िश्ता मसवदे में जब भी बात होती थी वो डेवलपमेंट टीम की होती थी, तो यहाँ पर अब डेवलपमेंट टीम की बजाय जब भी बात होती है वो स्क्रम टीम की होती है, और जो भी हम बातचीत करते हैं वहाँ पर हम सिर्फ एक ही टीम और स्क्रम टीम की बात करते हैं। ये वाला मेरा पसंदीदा है, टाइम बॉक्स। हम बड़े आराम से कहते हैं कि हमारे सारे इवेंट्स टाइम बॉक्स हैं। टाइम बॉक्स को उर्दू में क्या कहते हैं? महदूद मुद्दत। महदूद मुद्दत। ठीक है, एक जवाब हो गया। कोई और ट्राई कीजिए, सॉरी कोई और कोशिश कीजिए। लफ्जी मतलब बहुत मजेदार बनता है। लफ्जी मतलब बताइए, आप भी बताइए, आप भी कोशिश कीजिए। वक्त का डिब्बा। वक्त का डब्बा। या वक्त का ढांचा। इससे आप लोगों को वक्त का अंदाजा हो रहा होगा ढांचा। कि तर्जुमे के दौरान हम लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ा। वक्त का पहाड़ा। वक्त का पहाड़ा। ओके, कोई और? कैन आई गिव लाइक वन? एक, दायरा दो। वक्त। दायरा वक्त, ये किसी हद तक करीब तरीन है। मरब्बाउल वक्त। मुरब्बाउल वक्त। मुतयन वक्त। वक्त मुतय्यन। वक्त मुतयन। यस, वक्त मुतय्यन, कि ये एक वक्त मुतय्यन है, इसके अंदर हमने इसको खत्म करना है। ये किसका जवाब दुरुस्त हुआ है? हमें इलेक्ट्रा हम देना चाहेंगे। हाँ, इलेक्ट्रा हम देना चाहें तो किसको देना चाहेंगे भाई? वो एक दफा दोबारा बताइए। दायरा वक्त को देना। दायरा वक्त को दे दें, ये फिर आपने ही कहा होगा। जी डब्बा किसका देना है? आप इसका हसीब, आप इसका जवाब बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। इसका जवाब वक्ती कैद। वक्त इसका जवाब मैंने बताया नहीं। एक और वक्त मुअय्यन। वक्त मुअय्यन। वक्त मुअय्यन। यस जी, चलें आगे चलते चलिए। हैं। डेवलपर, ये एक तब्दीली की गई है। डेवलपमेंट टीम की जगह डेवलपर, ये एक बहुत ज़बरदस्त तब्दीली है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले जो है एक मसला रहता था कि डेवलपमेंट टीम एक किरदार था, एक रोल था। तो वो एक टीम भी है और एक रोल भी है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैंने कई दफ़ा ऐसा देखा है कि लोग जो है बात करते हैं कि ये
टीम की जिम्मेदारी है या टीम की जवाबदेही है। जिम्मेदारी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही मीन्स अकाउंटेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर मसला ये होता था कि अब वो कौन सी टीम की बात हो रही है, क्या ये डेवलपमेंट टीम की बात हो रही है या स्क्रम टीम की बात हो रही है। तो अब वो मसला, वो कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ एक ही टीम है और वो है स्क्रम टीम। अब जब भी हम टीम का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब है स्क्रम टीम है। मोम्मा, विजिबल को उर्दू में क्या कहते हैं? दिखाई देने वाला। आगे जाना है तो विजिबिलिटी ले लो, है ना, विजिबल हो जाओ। हम सारे ऐसी बात सुनते हैं, तो उर्दू क्या होगी? वजाहत, वजाहत, जाहिर होना, जाहिर होना। और कोशिश कीजिए, नजदीक जा रहे हैं। हद्दे निगाह, हद्दे निगाह, जाहिरी चीज, जाहिरी चीज, हद्दे निगाह, ठीक है। और नुमाया, ठीक है। नमूदार होने वाली चीज, नमूदार होने वाली चीज, बिल्कुल, ये भी हो सकता है। कुछ और? इसका एक शकील सी उर्दू में मरई भी कहते हैं इसको। बिल्कुल, मरई, नुमाया, मरई, ये बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमे हैं इसके। विजिबल का जो तर्जुमा है वो मरई या नुमाया। जी जिशान भाई, आगे चलिए। शुक्रिया। अच्छा, स्प्रिंट। तो स्प्रिंट जो है उसका दौरानिया तयशुदा वक्त है। गुज़िश्ता मुसव्वदे में ये वक्त मुअय्यन था। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको ये बता दूं कि इस मुसव्वदे में ये फिक्स टाइम है। गुज़िश्ता मुसव्वदे में ये टाइम बॉक्स था और इसकी वजह से गुज़िश्ता मुसव्वदे में वक्त मुअय्यन या टाइम बॉक्स के दो अलग अलग मानी अखज़ किए जाते थे। बाकी सारे इवेंट्स के लिए, बाकी सारे वाक़यात के लिए वक्त मुअय्यन वो होता था जो कि पहले ख़त्म हो सकता था। स्प्रिंट के लिए वक्त मुअय्यन वो होता था जो पहले ख़त्म नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन थी कि वक्त मुअय्यन दो अलग अलग मानों में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर वो कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अब स्प्रिंट जो है वो तयशुदा वक्त है, फिक्स्ड टाइम, और बाकी वाक़यात, बाकी इवेंट्स जो है वो वक्त मुअय्यन है। मतलब कि बाकी जो हैं वो ऐसे हैं जो कि वक्त से पहले ख़त्म किए जा सकते हैं। तो ये एक और कन्फ्यूजन खत्म करके जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम किया। एक तरह से अच्छा काम किया है कि कन्फ्यूजन खत्म हो गई, और एक तरह से थोड़ा सा काम मेरे लिए कम कर दिया है कि अब मैं इस पर मजीद कोई आर्टिकल नहीं लिख सकता। ये वाला अच्छा था वैसे जिशान भाई। मोहम्मा, स्टेक होल्डर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? सारे मैनेज करते होंगे अपने अपने जॉब्स पे काम करते हुए। हिस्सेदार, 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 हिस्सेदार तो पार्टनर हो। क्या? कोई और? हिस्सेदार, जिम्मेदारान तो जरा रिस्पॉन्सिबल, और सोचिए कुछ तो होगा। अराकीन, मौजूदा सदर, मेरे ख्याल में ये सबसे मुश्किल है। क्या हुआ, सब लोग खामोश हो गए? हसीब, सोच रहे हैं ना, मुश्किल काम दे दिया ये थोड़ा। ड्रॉप हो गया होगा। मुतल्लिकीन, मुतालिकीन, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है, मुतालिकीन। ये कौन साहब थे? मेरा नाम उस्मान अरशद है जी। उस्मान कहाँ थे आप? मैं S&P ग्लोबल में काम करता हूँ जी। अच्छा, इस्लामाबाद से हैं इसका मतलब? इस्लामाबाद से। चलें, बाकी हम तारुफ बाद में करते हैं। अभी आगे मजीद मौम में है उस्मान भाई के लिए। तो बिल्कुल आपका जवाब सही है, मुतालिकीन कहते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज का इजाफा करता जाऊं। कुछ जगहों पे जब आप उर्दू की या रहनुमाई स्क्रम का आप मुताला फरमाएंगे तो उसमें कुछ जगहों पे आपको इसका तर्जुमा जो है वो मुफाद से वाबस्ता अफराद करके भी मिलेगा।
बहरहाल हम मुआयने और मुवाफ़क़त के ज़रिए रहनुमाई स्क्रम के उर्दू तर्जुमे को भी बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। स्प्रिंट प्लानिंग में तब्दीली। स्प्रिंट प्लानिंग में पहले 2 उन्वानात होते थे, अब वहाँ पर एक मज़ीद उन्वान का इज़ाफ़ा किया गया है। तो पहले हम सिर्फ़ ये वहाँ पर तय करते थे कि हमने क्या करना है और कैसे करना है, अब हमने उसमें क्यों का इज़ाफ़ा भी किया है कि हमने ये क्यों करना है। एक और तब्दीली जो है वो ये है कि पहले स्प्रिंट प्लानिंग में डेवलपमेंट टीम किसी को बाहर से मदद के लिए बुला सकती थी। अब उन्होंने ये डेवलपमेंट टीम की बजाय स्क्रम टीम कर दिया है, जो कि उसका ज़ाहिर है उसकी हदूद भी बढ़ गई है कि डेवलपमेंट टीम की बजाय प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर भी बुला सकता है, और वो बेसिकली अब चूँकि सब कुछ एक ही टीम है, तो इसलिए वो हम सिर्फ स्क्रम टीम पे ही सब काम करते हैं और सब जिम्मेदारी और सब जवाबदेही जो है वो स्क्रम टीम की है। मोहम्मा, एडॉप्टिव की उर्दू। मोहसिन ये है सही मुश्किल। मेरा ख्याल है कि ये तो मुश्किल नहीं है, इसको अगर आप हस्बे मंशा अपनाने वाला। अपनाने वाला। हाँ ठीक है, और चलें, मैं जवाब मुहैया करता हूँ इसका। अनकोली, एडॉप्टिव। अनकोली कहते हैं इसे। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल में बड़े लोगों के लिए नया लफ्ज होगा। बिल्कुल। ये उर्दू का ही है अच्छा, ना? जी उर्दू का ही है। जी जी बिल्कुल उर्दू का है। अच्छा, ये मेरी सेकंड फेवरेट तब्दीली है स्क्रम रहनुमाई स्क्रम में। असल में मैं अपनी सबसे फेवरेट तब्दीली जो है वो बताना भूल गया। सबसे फेवरेट तब्दीली मेरी रहनुमाई स्क्रम में ये है कि अब उन्होंने बाज़ाब्ता, रस्मी और बिल्कुल एम्फेसाइज करके ये बताया है कि स्क्रम एक नामुकम्मल फ्रेमवर्क है। ये पहले भी था, लेकिन पहले लोग ये समझ बैठते थे कि स्क्रम शायद जो है वो हर मसले का हल है और एक तरीका है और सबने उसी तरीके से काम करना है। उन्होंने स्क्रम ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके ऊपर छोड़ी हैं, स्पेशली जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस हैं। तो अब उसमें से ही एक चीज़ ये है जो कि कम लागू करने वाली या लेस प्रिस्क्रिप्टिव बनाई गई है कि 3 सवाल जो डेली स्क्रम में पूछे जाते थे वो निकाल दिए गए हैं, क्योंकि उन 3 सवालों की वजह से कुछ लोग जो हैं और कुछ इदारे जो हैं वो इसको एक तरह से उन्होंने स्टेटस मीटिंग में इसको तब्दील कर दिया था, जो कि इसका मेन मकसद नहीं था। तो वो मेन मकसद से हटके वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होने लग गई थी। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने एक तरह से ये लाजिम मलजूम कर लिया था कि चूंकि ये स्क्रम गाइड या रहनुमाई स्क्रम में 3 सवाल लिखे हैं, इसलिए 3 सवाल तो पूछना लाजमी है। जबकि वो 3 सवाल एक मिसाल के तौर पे दिए गए थे, आप किसी और तरह से भी डेली स्क्रम पे काम कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने वो 3 सवाल जानबूझ के इसमें से निकाल दिए हैं। एक और चीज़ का उन्होंने ख़ास तौर पे इजाफा किया है। लोग शायद ये समझते थे कि मनसूबाबंदी जो है या प्लानिंग जो है वो सिर्फ डेली स्क्रम में ही होगी, रोज़ाना की बेस पे। उन्होंने अब ख़ास तौर पे ये बताया है कि मनसूबाबंदी या प्लानिंग जो है वो किसी भी वक्त हो सकती है, वो डेली स्क्रम के बाद में भी हो सकती है, पूरे दिन में किसी भी दौरान हो सकती है। इम्पेडिमेंट, ये तो आसान वाला है। रुकावट, रुकावट, बिल्कुल दुरुस्त। पहले ही आंसर सही आ गया। स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू में क्या तब्दीली की गई है? तो स्प्रिंट रिव्यू में अब जो है हम अपनी पेशरफ्त का प्रोडक्ट गोल की तरफ मुआयना करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट गोल की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो प्रोडक्ट गोल एक नई चीज़ का इजाफा किया गया है रहनुमाई स्क्रम में। तो यहाँ पर हम अपनी पेशरफ्त देखते हैं कि हम प्रोडक्ट गोल की तरफ किस तरह जा रहे हैं, हम अपने इंक्रीमेंट का मुआयना करते हैं। अच्छा माजरत, मैं म्यूट पे था और मैं बोल रहा था। ओरिजिन, इसकी उर्दू क्या होगी? असल या फिर सिक्का। असल या इब्तिदा। इब्तिदा। माखज़। माखज़, बिल्कुल दुरुस्त। दुरुस्त। लेक्चर डिलीवर करवा दें। हाँ जी बिल्कुल जरूर। बुनियाद जी निशान भाई आगे चलिए। नहीं, माखिज इसका जवाब आ चुका है।
स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, इसमें जो बहुत अहम तब्दीली है वो ये है कि पहले ये कहा गया था कि आपने कोई इसमें तब्दीली फाइंड आउट करनी है, ढूंढनी है और उसको अगले स्प्रिंट बैकलॉग में शामिल करना है। यहाँ से भी कुछ लोगों ने कुछ गलत जो है प्रैक्टिसेस, एंटी पैटर्न्स बनाने शुरू कर दिए थे, तो यहाँ पर उन्होंने इसको तब्दील करके ये कहा है कि अगली स्प्रिंट में नहीं करना बल्कि जल्द से जल्द करना है, क्योंकि ये मुमकिन है कि वो अगली स्प्रिंट में हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो अगली स्प्रिंट में ना हो बल्कि कुछ अरसे के बाद हो। तो उन्होंने अगली स्प्रिंट की बजाय यहाँ पर जल्द से जल्द में इसको तब्दील की है। और मैं दोबारा इस बात का इयादा कर दूं कि हम जो बता रहे हैं वो एक सिर्फ खुलासा है। अगर हमारे जो पैनलिस्ट हैं जो माशाल्लाह बहुत माहिरीन हैं, ज़िया और आबिद, वो इसको बहुत ज़्यादा तफसीलात में बता सकते हैं और वो बताएंगे भी। तो और यहाँ पर मकसद जो है वो एक तारुफ करवाना और उर्दू से मुतारिफ करवाना है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा इजाफा होगा। तो एक और मौका आप लोगों के लिए। नमूना नमूना नमूना, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट, आई नमूना थिंक में तो नमूना नहीं, नमू सिर्फ नमू। अच्छा चलें, ठीक है। नम, और कोई कोशिश करे। चलें, मैं बता देता हूँ इसका। नमूना की हद तक, या कह लें आधा जवाब दुरुस्त है नमूना की हद तक। अगर हम उसमें जात का इजाफा कर लें, नमूना जात, तो फिर वो हो गया। अगर सिंपल एक को कह लें तो बिल्कुल नमूना हो सकता है। वो तो आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना फिर। अच्छा, फिर चलें, इसका मतलब ये ऐसे इमला कर की लें। गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, तस्हीह करने का शुक्रिया। नमूना, जी हाँ, आर्टिफैक्ट का तो मतलब यही आएगा। अच्छा, जी तो जी नमूना जात के अज़म, तो यहाँ जी पर जी, जैसा कि हमने पहले दुरुस्त। बताया था कि यहाँ पर अब हर नमूना जात के साथ जो है वो एक अज़म का इजाफा किया गया या वाबस्तगी का इजाफा किया गया है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग का अज़म या वाबस्तगी जो है वो प्रोडक्ट गोल है, जो कि जिसका इजाफा इस रहनुमाई स्क्रम के मुसव्वदे में किया गया है। स्प्रिंट गोल का अज़म जो है वो स्प्रिंट बैकलॉग का अज़म जो है वो स्प्रिंट गोल है। ये पहले भी से ही मौजूद था, लेकिन पहले कुछ लोग जो हैं वो इसको साथ इसका ताल्लुक बना नहीं पाते थे, तो अब उन्होंने इसको ख़ास तौर पर जो बयान किया है कि स्प्रिंट बैकलॉग का आज़म या स्प्रिंट बैकलॉग की वाबस्तगी जो है वो स्प्रिंट गोल है। इसी तरह से इंक्रीमेंट का आज़म जो है वो मुकम्मल की तारीफ है। तो ये भी पहले से मौजूद था, लेकिन जैसे कि हमने पहले देखा, आप लोग ट्रांसपेरेंसी की उर्दू देख चुके हैं कि इंक्रीमेंट की शफाफियत जो है वो मुकम्मल की तारीफ से होती है। अच्छा, हम वैल्यू का तो हम देख चुके हैं कि वो तो कदर होती है। वैल्यूज को उर्दू अहमियत में क्या कदर, कहेंगे? अहमियत कदर, अहमियत कदर, वो तो वैल्यू हो गई। इकदार, वैल्यूज क्या होगा? इकदार, अदरार। यस, अकदार। इदराक। कदर की जमा अकदार। जी निशान भाई, आगे चलिए। बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, एक और तब्दीली जो की गई है वो खुद मुनज़्ज़म से खुद मुंतज़म की तरफ की गई है, यानी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग से सेल्फ मैनेजिंग की तरफ। तो खुद मुनज़्ज़म टीम या खुद मुनज़्ज़म जमात ये तय करती थी कि किसने करना है काम और कैसे करना है काम। खुद मुंतज़िम जमात या खुद मुंतज़िम टीम, सेल्फ मैनेज टीम जो है वो ये भी तय करती है कि किस चीज़ पर काम करना है। और यहाँ पर जो टीम, अगेन मैं दोबारा ये बात दोहरा दूं कि टीम से मतलब स्क्रम टीम है। तो स्क्रम टीम ना सिर्फ ये तय करती है कि किसने काम करना है और कैसे काम करना है, बल्कि ये भी तय करती है कि किस पर काम करना है। क्रॉस फंक्शनल की उर्दू। तीसमार खान, कोशिश कीजिए। तीसमार खान कुड बी। हरफन मौला, हरफन मौला, ओके। कुछ और? हाँ जी, कोई और कोशिश? कसीरुज़ ज़ाब्ता, क्रॉस फंक्शनल, कसीरुज़ ज़ाब्ता। अभी आप लोगों के इम्तहानात जी खत्म निशांत नहीं भाई, हुए। आगे चलिए। आगे चल रहा हूँ मैं। अभी आप लोगों के हाँ इम्तहानात हाँ, खत्म बिल्कुल। नहीं हुए हैं। अभी तो आप लोगों से उर्दू पूछी जा रही थी। अब हम लोग जो है इसको जरा एक मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। अब आपके लिए कुछ इजाफी मौमे हैं। इस इजाफी मौमे में आपको उर्दू बताई जा रही है और अब आपने इनकी अंग्रेजी बतानी है।
जी, तो सबसे पहला मालिक मसनू। प्रोडक्ट ओनर शुड ओह यस, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ओनर। जी बिल्कुल, प्रोडक्ट ओनर। डेवलपमेंट टीम, ओह सॉरी, ये तो मैंने खुद बता दिया। तो खुद ही बता दिया। तश्कीली जमात वाज डेवलपमेंट टीम। डेवलपर्स। यस, डेवलपमेंट टीम बेसिकली तश्कीली जमात डेवलपमेंट टीम थी। राजे पे माजी, एम्पिरिसिज्म नहीं, कोई और कोशिश करें। माजी क्या है? नहीं देखिए अभी, चले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। माजी क्या होता है? इट्स पास्ट। बैकलॉग काइंड ऑफ थिंग, ओके, देखें या माजी स्टोरेज है, डन जो है। माजी का मतलब पास्ट। अगर पास्ट है और आप पास्ट पे किसी चीज पे देख रहे हैं तो आप कब देखते हैं? स्क्रम के कौन से इवेंट में देखते हैं? ओह यस, स्क्रम में सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव। स्क्रम में सिर्फ एक इवेंट है जो माजी को पास्ट को देखता है, बाकी कोई इवेंट पास्ट को नहीं देखता। यस, उसके बाद हमारे पास आ गया मसनूए बकाया। बैकलॉग नहीं, प्रोडक्ट बैकलॉग है। इंक्रीमेंट। प्रोडक्ट बैकलॉग है, बिल्कुल प्रोडक्ट बैकलॉग। क्यों? क्योंकि मसनू है। उसके बाद आ गया अफजाइश, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, बिल्कुल। और सबसे अच्छा मेरा पसंदीदा लफ्ज, और मैं इस पे जिशान भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, मेरी वाकफियत इस वर्ड से उन्होंने ही कराई थी, या इस लफ्ज से उन्होंने कराई थी, ताकिम। स्प्रिंट तो नहीं है ये? नहीं, वैसे इतनी मुश्किल उर्दू किसने सीखी है? ये जिशान भाई से हम सीखते हैं सारे। ताकिम। यस, ताकिम क्या हो सकता है? रिव्यू। अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ कि ये आप लोगों ने इसका इक्विवेलेंट जो है ना, वो सबसे पहले आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कहीं। ये रिमाइंडर वगैरह की बात तो नहीं है जी? इंक्रीमेंट। नहीं, ये है सेट। हमने सबने सेट पढ़े थे ना मैथ्स में, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं स्कूल में तो पढ़े ही होंगे। लेकिन ये वर्ड तो फर्स्ट टाइम देखा लाइफ में मैंने भी पहली दफा ही देखा था, यकीन जानिए कि जब हम ट्रांसलेशन कर रहे थे तो ऐसे, या तर्जुमा कर रहे थे तो उस वक्त ऐसे न जाने कितने अल्फाज थे कि जो है वो हमने देखे, और हमने इधर उधर से देखा भी, लुग़तों में भी ढूंढा, और उसके बाद जो है वो आखिर में हम फिर इकट्ठा बैठ के फिर ये देखते थे कि अच्छा इसका ये मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह, अगर आपको एक मैं एग्जांपल दूं या एक मिसाल दूं, वो जो जिशान भाई ने अभी इस शुरू में एक बात की थी लीन सोच की, तो लीन सोच का जब बिल्कुल लफ्जी मतलब निकालने की बात गई तो वो कुछ निकला था, कुछ शरीरी सोच। अब शरीरी सोच जो है वो तो मतलब कुछ मतलब ही ना बना उसका। तो फिर हमने क्या किया कि फिर हमने ये वाली कोशिश की कि हम जो है वो ऐसे अल्फाज जो कि शायद अगर हम डाल दें बीच में तो वो बिल्कुल ही मतलब से साइड पे निकल जाएंगे, और हम उनका शायद इक्विवेलेंट उर्दू में मौजूद है ही नहीं अभी, या उनका मुतबादिल उर्दू में मौजूद नहीं है। तो फिर हमने लीन को लीन ही रहने दिया और हमने उसको लीन सोच लेके दे दिया। तो ये जो आपने अपने सामने दस्तावेज देखी होगी पूरी उर्दू की, इसके पीछे बहुत बहुत मेहनत लगी है बहुत सारे लोगों की, जिनके बारे में मोहसिन ने जिक्र किया अभी बिल्कुल शुरू में, कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत की और आपस में बहुत सारी बातें की, डिस्कशंस की लंबी लंबी, और उसके बाद जो है वो जाके कहीं ये कुछ निकला जो कि आपके सामने है। यकीनन ये बिल्कुल ऐसी चीज शायद ना हो कि जिसके अंदर कोई तब्दीली मुतवक्के नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अभी जिशान ने आपको बताया भी था, जिशान भाई ने, कि यकीनन हम इसको दोबारा एक दफ़ा बैठेंगे, हम मुआयना करेंगे इसका, और फिर हम देखेंगे कि हमें इसमें मजीद बेहतरी कैसे लेके आनी है। इसी पे थोड़ा सा जी इजाफा जिशान भाई। करते हुए जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिशान भाई एक क्वेश्चन छोटा सा। जी ये टर्म्स होती हैं जिनको अगर एज इट इज ही चलने दिया जाए तो वो ज्यादा आसान नहीं है याद करना? ये इस पे जो है मैं वही उसकी तरफ आ रहा था। तो बेसिकली ये सारे अल्फाज जो आपको सामने इस स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, और ये बेसिकली कोई एक मकसद है कि ये पिछले स्लाइड्स में नहीं थे।
ये मजीद मौमे में, इजाफी मौमे में दिए गए हैं, और उसका वजह ये है कि इनमें से कोई भी लफ्ज आपको रहनुमाए स्क्रम के उर्दू तर्जुमे में नहीं मिलेगा, ये सारे उसमें से निकाल दिए गए हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि 3 हमने इसके मुसव्वदे तैयार किए थे, जो इसका बिल्कुल पहला मुसव्वदा तैयार किया था, उस पहले मुसव्वदे में हमने हत्तल इम्कान कोशिश की थी कि उर्दू का कोई भी लफ्ज इस्तेमाल ना हो। उस वक्त हमारा बेसिक कायदा ये था कि अगर कोई उर्दू का लफ्ज मौजूद है, भले से वो राइज नहीं है या नहीं है, अगर कोई उर्दू का लफ्ज लुगत में मौजूद है तो हम वो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो उसके नतीजे में हमें प्रोडक्ट ऑनर की जगह मालिक मसनू, रेट्रोस्पेक्टिव की जगह रजबा माजी, सेट की जगह ताकीम, ये सब इस्तेमाल करने पड़े। तो जो हमारा पहला मुसव्वदा था वो शायद 1-2 अदीबों के अलावा किसी की भी समझ में नहीं आता। फिर हमने दूसरी तरफ गए, फिर हमने दूसरा मुसव्वदा बनाया, फिर हमने तीसरा मुसव्वदा बनाया। इसीलिए अगर आप में से किसी ने उर्दू तर्जुमे का मौजूदा मुसव्वदा देखा हो तो आपको उसमें इस तरह के अल्फाज नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ जगहों पर हमने उन अल्फाज के साथ इंग्लिश के अल्फाज भी लिख दिए हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर हम ये वाले अल्फाज उसमें शामिल कर देते तो शायद तर्जुमा तो हो जाता, लेकिन वो तर्जुमा किसी की समझ में नहीं आता। इसके अंदर एक और चीज मैं शामिल कर दूं कि हमारे पास कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं जो कि स्क्रम वाले भेजते हैं। तो उनके मुताबिक भी ये था कि भाई कुछ आपके अल्फाज ऐसे हैं जिनको आप उनका तर्जमा ना करें। तो इस वजह से उन अल्फाज का हमने तर्जमा नहीं किया, उनको हमने वैसे ही मेंशन किया। तो जिस तरह माल के मसले है, इसका तर्जमा है, लेकिन इसको हमने उर्दू में भी प्रोडक्ट ऑनर ही मेंशन किया। लेकिन जैसा कि हसीब ने बताया कि इस पे मजीद काम बिल्कुल हो सकता है, तो हम इस पे मुआयना और मुवाफ़क़त बेसिकली इंस्पेक्ट एंड अडॉप्ट, मुआयना और मुवाफ़क़त के ज़रिए हम इसको बेहतर करेंगे। और और हमने दर हकीकत ये किया भी है, मुआयना और मुवाफ़क़त के ज़रिए इसको बेहतर किया है। जैसे कहा कि हमने इसके 3 मुसव्वदे तैयार किए थे गुज़िश्ता 6 माह में, और हमें आपकी राय दरकार है। बराए मेहरबानी अपनी राय से आगाह करें और हमारी मदद करें ताकि हम मुआयने और मुवाफ़क़त के ज़रिए इसको बेहतर कर सकें। आखिर में हमारे पास कुछ एतराफ़ात हैं। तो सबसे पहले जो है वो एतराफ़, मोहसिन शहज़ाद का बहुत बहुत शुक्रिया, उस मर्द आहिन ने इस ख्याल को शुरू किया। मैंने 2017 में पहला मुसव्वदा तैयार किया, और वो पहला मुसव्वदा बिल्कुल खालिस उर्दू से भरपूर था, जैसे कि हसीब ने बताया, और बाद में हमें उसमें तब्दीलियाँ करनी पड़ी कि वो शायद मेरे अलावा किसी की भी समझ में नहीं आ रहा होगा। अब्दुल हसीम कासिम ने लसानी माहिरीन से राय लेने के बाद पूरा मुसव्वदा दोबारा लिखा कि हम जो है उसको आसान ज़बान में करें। सलमान असलम और आयशा ज़मानी, उन्होंने नक्कात की हैसियत से इसमें राय दी, उन्होंने दोबारा कुछ इसके हिस्से दोबारा भी लिखे। अब्दुल हसीम कासिम 2020 के तर्जुमे पे दोबारा उन्होंने उस पर काम शुरू किया, जो हमने एक बना ली थे अपना तरीक़ाकार कि हम इतना खालिस ना करें कि किसी की समझ में ना आए। मोहसिन शहज़ाद scrum.org से मुस्तकिल राब्ते में थे, और मुसव्वदा रस्मी तौर पर मंजूर कराने के लिए जितने ज़रूरी काम थे वो मोहसिन शहज़ाद ने किए थे, और उसके साथ साथ वो बिल्कुल हमारे साथ एक नक्कात की हैसियत से भी मौजूद थे, और वो नक्कात की हैसियत से हमें ये राय देते थे कि ये वाला जो है तर्जुमा कितना आम फहम है कि हम बराए तर्जुमा कर रहे हैं या तर्जुमे से हम किसी का फ़ायदा भी कर रहे हैं और किसी को मदद भी हो रही है। अब आप लोगों का इम्तिहान ख़त्म होता है। अब अगर आप लोग चाहें तो अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि हम लोगों ने कम से कम अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे। इससे मैं कुछ इसमें शामिल करता जाऊं। इससे आप लोगों को जी। इतना पता चल चुका होगा कि हम सब में से सबसे ज्यादा उर्दू किसकी बेहतर है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं ज़िशान अमजद का कि उर्दू के मामले में इन सारी हम लोगों को जितनी भी रहनुमाई चाहिए थी वो उर्दू के मामले में इन्होंने हमें फराहम की, और इस तरह करके बाकी लोग भी इसमें शामिल हुए। और इससे पहले कि हम हम अपने सेशन के अंदर जाएं, मुझे मालूम करना है कि जो कुबैर की टीम से उनकी टीम में से किसी बंदे ने ज्वाइन किया है हमें। जी जी, अब्दुल रशीद ने ज्वाइन किया है। अब्दुल रशीद सिर्फ आप ही हैं या आपके अलावा कोई और भी है? जी, मैं इमरान बात कर रहा हूँ और अब्दुल रशीद मेरे साथ हैं। अच्छा, इमरान और अब्दुल रशीद।
तो सब लोगों को मैं सिर्फ यही मेंशन करना चाहूँगा कि ये इन लोगों की भी एक टीम थी जिन लोगों ने इस इनिशिएटिव पे काम किया था कुबैर के साथ मिलके। अनफॉर्चुनेटली मुझे उसकी डिटेल पता नहीं क्योंकि वो किस तरीके से स्क्रम गाइड में वो पब्लिश नहीं हो सकी, लेकिन इनकी एफर्ट्स इसमें शामिल थी। इन लोगों ने अपने तौर पे भी सारी इसमें जितनी भी इसकी तर्जुमा करना था, ये सारे काम करने थे, इन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की थी इस चीज़ पे। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग सब लोग, क्योंकि हम सारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, वो सब लोग हमारे साथ आएँ इस मकसद के लिए, हमारे साथ इस कामयाबी का हिस्सा बने और अपनी राय भी शेयर करें। तो इमरान और अब्दुल रशीद, आप कुछ अपनी जितनी आपने कोशिश की थी उसके मुतालिक कुछ कहना चाहेंगे? अब्दुल रशीद और इमरान। जी आवाज आ रही है? जी अब आई है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये जब ये मैंने ट्रांसलेट की थी, तो जब मैं ये ट्रांसलेट कर रहा था तो उसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे थे जो मतलब ट्रांसलेट नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हमें ये कहा गया कि इसको करना है उर्दू में। जिस तरह क्रू एक वर्ड है, उसको हम ताकम लिखेंगे तो मेरे कुछ समझ नहीं आएगा तो दूसरे के क्या समझ आएगा। इस किस्म की मुश्किलात थी, तो अभी भी हैं वो। तो अभी आगे हम इसको दोबारा एक नए तरीके से बना रहे हैं, एक नया मुसव्वदा तैयार करेंगे कुछ दिनों बाद, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो आपसे चले आपको हम फिर आपसे शेयर करेंगे। खुशामदीद कहते हैं हमारी टीम में। आप जो भी काम करें, हम लोगों ने जितना भी एक काम किया है इसको आप दोबारा से देख के इसमें जो भी आपने इसमें कुछ चीज़ें जो ठीक करनी है आप हमें भी बता सकते हैं, हमारी टीम के साथ काम भी कर सकते हैं ताकि हम इसको और अच्छा बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं तकरीबन ये इसको स्टार्ट करूंगा और जब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा तो कुबैर भाई से शेयर करूंगा, तो वो आपसे शेयर कर लेंगे फिर। वो आप मेरे से डायरेक्ट ही शेयर कर लेंगे यार, इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट कर हम लेंगे सब आपसे। मिल के काम करें तो ज्यादा बराह रास्त कर लेंगे। खुद मुंतजिम जमात। खुद मुंतजिम जमात। जबरदस्त। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक Mohsin bhai, before we disconnect, it's me Shahbaz from Chicago. I was wondering कि हमारे पास ऐसे कोई platform है like where we can all get together like WhatsApp group whatever, जिसमें हमें next event की updates आती रहे, so we can stay in touch. This is actually Shahbaz, we have the meetup channel, we have all the social media channels for this community. Perfect. So Okay. you can get in touch with meetup, LinkedIn, Facebook, Twitter, all the channels are available for this community. Good to know. I'll be looking forward. Yeah, you And can. actually session is not going to end now. We are going to ask our honorable guest experts Zia Malik and Abid Qureshi. Yeah, we have two CSTs. मोहसिन भाई, आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं इससे पहले कि आप एक्सपर्ट्स पे बात चल जाए? मैं ये बताना चाह रहा था हमारे सामीन को, जो शायद इस चीज से वाकिफ हों या नहीं, कि जीशान भाई जो कि ये जो है वो इनिशिएटिव भी है और उन्होंने गाइडेंस भी दी है और खुद तर्जुमा मुतरजम भी हैं। ये काफी अरसा पहले से ऑनलाइन ब्लॉग्स पे और कुछ फोरम्स पे अपने इदारिये और इशाअत करते रहे हैं और खासी हद तक मकबूल भी थे, लेकिन वो यकीनन वो तर्जुमे नहीं थे, वो इनके आरा थी या किसी भी टॉपिक के ऊपर जो उर्दू के अंदर ये ब्लॉग दिखते रहे हैं और इंतहाई दिलचस्प और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत दाद समेटी शान भाई ने, जो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं तो शायद जो कम्युनिटी में है लोग तो वो आम जिंदगी के टॉपिक्स के ऊपर या आजकल के हालात के ऊपर, और कुछ है वो मज़ाहती यानी आप समझे कि जो नाकदीन की हैसियत से या कुछ जो है वो किसी तबसरे की हैसियत से, और कुछ जगहों पे जो है वो जिसे कहते हैं इंशाइया, वो भी शान भाई ने लिखी और इंतहाई क्या कहना चाहिए दिलकश अंदाज, और ये भी एक इनकी शख्सियत का पहलू है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। तो मैं ये चाहता था कि हमारे सामीन इस चीज से भी मुतारिफ हों। तो बहुत शुक्रिया जीशान भाई। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। जीशान भाई, देखें आपके ये सारे इदारिये पढ़ने वाले आ गए हैं। जरा मैंने लास्ट ईयर मैं यूएस में था जीशान के घर पे ही, तो इन्होंने मुझे ये सारे अपने जो उर्दू की इशाअत दिखाई थी,
और जिसको मैंने पढ़ने की कोशिश की थी। सो मुझे मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपके बहुत से इस तरह लोग होंगे पढ़ने वाले, तो एक तो हमें अभी मिल गया शाह। बहुत शुक्रिया। So thank you very much, guys, and let's start the next session. That's a very important session. We have two CSTs, and these are the two CSTs. They are also our mentors for Pakistan. So they have started the Scrum Alliance trainings, and they visited Pakistan. They came here with us, and we co-trained with them. And there's a lot of efforts they have made for developing the communities in Pakistan. So I would welcome. First of all, I would like to welcome Namra. She is also from our community and chapter president from Karachi. And she will take care of the moderation part from here to introduce Abid and Namra. Over to you. Thank you so much, Mohsen, for a kind introduction. Assalamu alaikum, everyone. It's amazing to be with you all. I'm so sorry, I'm not that excellent like Zishan Bhai in Urdu. So I would like to moderate in English from now onwards. So thank you again, everyone, for staying with us for the launching ceremony of Scrum Guide, Urdu version by Pakistan Agile Education. As we will be proceeding with our panel discussion, I would like to welcome our beloved chief guests and favorite trainers of this session, Zia Malik and Abid Qureshi. Zia Malik is a very experienced Agile trainer and a certified Scrum trainer, passionate about creating a learning environment through expert facilitation. And no doubt I can say that because I have experienced it. One of the handful of UK certified enterprise coaches with the Scrum Alliance, Zia has been guiding organizational change through a holistic coaching approach since 2008. And I believe it's a huge era till now. Zia has extensive experience within a variety of industries, including fintech, aerospace, pharma, retail, media logistics, to name a few. All this with an established foundation of knowledge gained over 14 years of experience in the industry. So we all welcome you, Zia, on the board. Moving towards Abid Qureshi is again one of my favorite trainers, and personally we have conducted many trainings together. Like even I have taken my certified Scrum product owner training with him. So just moving forward with his introduction, Abid is a Scrum Alliance certified enterprise coach. He is also certified Scrum trainer and active software developer as well. He is helping companies realize business goals through software for 20 years. And I believe, again, it's a huge era. Full life cycle experience, which includes, building teams, developing processes, developing and extending legacy enterprise system, and dedicated to the continuous improvement and able to bring the best out of teams, able to relate to a wide range of businesses and IT professional in his all over experience. So we also welcome you, Abid Qureshi, on our channel. So before we move forward, I would like to share some guidelines for this session. If you have questions for our chief guest and panelists, then please start adding it one by one in the comments section. And we will take it one by one in order to maintain the discipline of the panel discussion. Thank you. So we welcome you, Zia and Abid. Assalamu alaikum. Welcome everybody. Thank you for having us. Assalamu alaikum. Good to be here. Thank you. I hope you guys are doing great. And how is quarantine going in London? Yeah, no, alhamdulillah, we're doing well. Chugging along. Everyone's yeah, we're very fortunate actually to be able to be in this profession really, so we can continue working. So alhamdulillah, things are very good. Great. What about you, Zia? Yeah, same. I'm not in London, but the whole of UK, as you're probably aware, is in lockdown at the moment until 2nd of December. So alhamdulillah, everything is going well. As Abid said, we must remember that we are very privileged to be in the profession we're in and the ability to still help people online. So that is a big blessing.
Indeed, indeed. That's not a doubt even. So before we just receive questions from our participants, so we would like to start with our very familiar question that you guys would be expecting as well, that what is your opinion and how do you feel about this Scrum Guide launching ceremony in Urdu version? Because this is something happened for the first time. So yeah, I think it's good. I think there's been some initiatives before, but this one I think is very it's involving more people, and it was really exciting actually to see you guys go through all the words in such a large group, such a huge collaborative event, which is really good. I think there's been some initiatives before, but they were smaller. This one here is quite collaborative, which is excellent. It's not easy to do, and language is consensual, so it's good to get as many viewpoints as you can. I remember trying to translate for my father-in-law hot dog into Urdu. It didn't go down too well. So I think the literal translation would be garam kutta, and I don't think he was very interested in having a garam kutta. But the words here that you guys were discussing. He intentionally asked you to translate it. So no, I was trying to really struggle. See, it's not just the translation, the literal translation, but also the connotations, the implications of the word. They have certain, like the word I used to be called sometimes when I was younger is actually a word which is a very praiseworthy word in English, the word for owl, but in Urdu it doesn't sound so good, does it? So I would have considered a compliment, son of an owl. I thought it was pretty it's not bad, yeah. But in Urdu, there's also cultural implications. It's not just the literal translation. So involving so many people and getting so many different points of views is absolutely essential. As also not only as Scrum evolves, but also the language, the Urdu language, how we use it in different contexts as well. So which is really good. Yeah, I'd just like to add congratulations to everyone who's worked on this. It is really it's really challenging, as Abid said, to deal with language. I will spare you my Urdu linguistic abilities for this call anyway. I don't think I can surpass what Abid has shared with his, but I will certainly congratulate all of you. And I think one of the biggest things is, while the English Scrum Guide, of course, for the Pakistani community in Pakistan is perfectly acceptable. Just going the extra mile and providing an Urdu version is fantastic, and it really shows your dedication as a community to grow awareness of agile ways of working, really, and primarily Scrum, to bring it to lots of other people who wouldn't have the ability to otherwise perhaps access this. So keep it up, carry on what you're doing, share, and give your time to your community. That's the best thing you can be doing. So well done. And I think also the fact that the timing of it in coordination with this, I've never seen such a global fanfare for the launch of the Scrum Guide. Usually it's a quiet thing. It's been done, just very, very quietly. But here, involving so many people all around the world, there's other events going on as well, I'm sure. I mean, there's the official one with Ken Schwaber and Jeff Sutherland, which happened. But then there's other groups as well, I'm sure. So this is, I think, really good. Some building on the momentum. Definitely. Thank you so much, Jia and Abid, for this excellent briefing and feedback for us. So we have a question, but no doubt there are two questions from Usman Arshad with us. One is... can you hear me? Sorry, yes. Sorry to cut you off. So before we move on to questions, I would like to ask one question from Jia and Abid. So guys, since you are in touch with the Scrum Alliance and these companies, so I would like to ask that what's the major changes you have already seen in the new Scrum Guide? So what are your views about it? Take an example, we have product goal as well. There is the new area in Scrum planning, that's why. We will talk about the why as well. So there are multiple changes. Those have been made in Scrum Guide. So overall, what's
overall, what's your view about it? Is like how this will be helping for all the projects in the market? Yeah, I think I'll pick up a couple of points. I know that Abid has quite a few to select. I think overall, I quite like what's been done with the Scrum Guide. With this particular revision, I think for me, less is always more, and the less rules you can have, the more ability a team has to, I guess, self-organize, to be creative, to solve problems, and it's kind of inherently written in the Scrum Guide where the idea is that the rules are limited so that essentially a team can use their creative intelligence to solve the problems, and I think that's for me that's an overarching pull for me for this 2020 version. One of the things that I really quite liked, and then I'll let Abid share his thoughts as well. One of the things I quite liked was the idea of giving a home to things like the definition of done, which was never really considered an artifact, but was considered an artifact. Now I like the way everything has been organized, where ultimately you have the three core artifacts, which is your product backlog, your sprint backlog, and your increment. But along with those, you have commitments, and those commitments are the product backlog now has a product goal, the sprint backlog now has associated with it the sprint goal, and importantly, the increment very neatly has the definition of done as a commitment. And that was something that really resonated with me. I'll hand over to Abid to kind of share some of his thoughts as well. Yeah, so first of all, overall, the size, the fact that it's gone down, I did a little word calculation. It's the new guide is 54% the size of the original. So we're looking at a 44% reduction in size, which is quite remarkable when we're working in an age where a lot of people are trying to sell heavyweight processes, lots of complexity. And I don't think that's the way to tackle complexity, is by adding more complexity. So the simplification and putting less, having less in it, transfers more of the responsibility to you to inspect and adapt to your particular circumstances. So I think that's a huge statement here. When everybody else is trying to scale up and complicate things, and Scrum seems to be simplifying things, and they've done it before as well. The team size, for example, has gotten smaller, but now the Scrum Guide itself has gotten more concise and smaller as well, and less prescriptive. So that's really good. The other thing I like about this particular version is the amount of collaboration that's gone into it. What you guys are seeing is, of course, just the tip of the iceberg. Maybe I am also seeing the tip of the iceberg. I wasn't involved in previous versions, but I know this particular version has been, it's gone through several reviews through several people and several iterations, and they didn't rush this one. This one was looked at critically by a lot of people. This stuff is not based on theory. So this is not how things are supposed to work. This is how things do work in organizations which are successful. So these are based on patterns that people have seen. And of course, patterns change over time. Before, trying to deliver a releasable working product increment in 30 days or less was pretty remarkable. But nowadays, patterns have changed because technologies change and people are able to do much more. So little things like that, removing even though there wasn't an explicit implication that you had to deliver one releasable product increment, now it's pretty explicit that you can deliver several product increments per sprint. So this is in line with the very first principle of the Manifesto, which is around continuous delivery. So people can now see that actually we can do continuous delivery within Scrum. We don't have to have one releasable product increment at the end of the sprint. So that's quite powerful. There's more stuff I can say. There's some stuff I don't like about it, and that's not going to go away. There's always things that we're a highly opinionated community, and me being amongst one of the most highly opinionated people I know, with very pedantic. I can be very pedantic with wording and stuff. So, but we can maybe go into some of the questions, maybe, and or how do you like? You can continue from how you want to continue. Yeah, so thank you so much, Abid and Zia again. Yeah, we have few questions from our participants, so we will carry on by one. So the first question that we have right now is from Usman Arshad, and the question is, what's the target audience of this Urdu guide, considering
all development work is normally done in English medium. Zishan or the people who have I guess this need to answer this. So Zishan, would you like to answer this? Yeah. Okay. So my answer is that in the very first version of the Urdu translation of the sprint guide, we made it very pure Urdu. And as you noticed from one of the last activity of the quizzes, most of the people are not even aware of those words. So that's why we inspected and adopted ourselves to make it better and make it more user-friendly. So now this is more, to the best of my knowledge, this is more understandable as compared to what the first version is. And I still believe that the people can learn the most in their language, which they understand, the native language. And as per one of my teachers said that if you can dream in that language, then it means you are comfortable in that language. So yes, most of the development work is done in English. And if you are comfortable with English, and there are a lot of people who are comfortable, and there is nothing wrong, I'm not against English, and you can definitely take an advantage of the English one, but there are a huge audience, there is a huge gap for the people who are not that much comfortable with English language, and this is hopefully going to provide one step forward and trying to fill some of the gaps, so they will be more comfortable with this thing. I used to say there are only two ways to do this thing, either make it in our own language or either learn that language. So whatever way it works, we are trying to provide one opportunity for them. So this is my point of view. Mohsin, Hasib, and our panel experts, Zia and Abid, anyone wants to add anything? I think that's very well said. And overall, the purpose of translating any guide is actually to giving the opportunity to all the native people, so they can also read it. And also this is a representation from your country as well. So that's the reason, if you go to scrumguides.org, you will see around 40 or more than 40 translations all over the world from different countries. So if English is the only medium, so then definitely the other translations. So the purpose is, again, there is a lot of people who still get the benefit from the Urdu. So that's the main purpose over here. And other than that, there is another standard that Scrum Guide, they already mentioned, that the particular keywords, those are remain the same. Take an example, Scrum Master, Product Owner, Development Team. So these words remain the same. So those cannot be converted, and they explicitly mentioned it. So that's the reason. So we have the same words, those we are using in our team and in our projects. And other than that, the rest of the details are translated in Urdu. So we have another question from the same person, Namra. I hope this answered your questions, Usman. There was one about the what a sprint as a project really means. Is that what? Did you guys answer that one? Yeah. Yeah. Do you want me to have a go at that? Yeah, let's go with this one. Okay, sure. So, yeah, I think one of the surprising things I notice when I'm training is that a lot of people think that you have several sprints within a project. And that's, what happens, that leads to people not having product increments. They just go from sprint to sprint, carrying work into the next sprint, thinking, well, there's still more time for the project. But actually, now it's quite explicit. It was actually explicit in the previous version as well. The sprint is a project. And we don't call it a project, we call it a sprint because sprints are short. And so we don't have long projects. The longest project you're allowed to have in Scrum is 30 calendar days, right? So it really pushes this idea that you have to have something which is releasable, which is usable within that time, that you can't take it for granted that you're always going to have another sprint. And especially in this day and age, I think that is more relevant than ever before, as we don't even know what's going to happen next week or 2 weeks from now, whether the markets are going to change, whether new products and services are come online because of all the uncertainty right now in the world. So I think this is really good. Yeah, I 100% agree with that. But just very briefly, I think
I think organizations also need to understand that, organizations often come from a very project-centric view of the world, which is very much a 19th century kind of view of, this is, we've got some work, we need to deliver it, and it's a self-contained project. And often many of you will be working, no doubt, on more than one project at any one time. So there's no clear identification of really what value is to an organization and what they should be doing first over something else. And this is where a lot of that mindset comes from. I think where Scrum challenges that, as Abid said very eloquently, is ultimately it allows you to focus on the most important thing, and that could be equally one sprint, whatever that sprint length might be. It doesn't necessarily need to be considered as a project. And multiple projects mean multiple people are working on multiple things, which is never going to go down well for your ability to adapt quickly to a changing world. And complexity. So yeah, Abid, and thank you so much for answering that. I do have a follow-up question, if you don't mind. Please. So yeah, my confusion is that with the new changes coming into the Scrum 2020 guide, things are getting more shorter, like the Scrum team size is being restricted at or recommended at 10. And in my opinion, the whole concept of development team within a Scrum team was removed to reduce the potential dysfunctions between the product owner and the development team, right? There was an us versus them concept, and we have to focus on the entire Scrum team as per the same objective. But with new technologies like scaled agile coming into picture, they're going even more shorter. Like I used to work in a 4-week sprint, then it turned into a 3-week sprint, and now the scale agile recommends us to go for a 2-week sprint, right? So what toll does it take? I think in your opinion, do you think this sprint shift, this team size change will increase the operational costs on the project as well? And wouldn't that increase loopholes for the team members and the development team itself, which eventually will defeat the purpose? So my understanding is that team size, the Scrum team itself, so the product owner was always on the Scrum team, right? And so was the development team, and so was the Scrum Master. They were all on the same team. I don't think it was maybe made 100% clear. So maybe this change might help do that. But there was an us and them thing, I think, in the past. But the team size, technically, I think in the past, if you look at it technically, it would be a maximum of 11 people, right? Because and the old Scrum Guide was very careful. It didn't mandate a maximum size. It simply provided some rationale for why 11 is why 9 is too big and why 3 is any less. But it's quite I think this Scrum is carefully crafted in that it's sufficiently vague on certain things. But you're right with the team size. Before they used to, in the old several years ago, it used to be 5 people to 9 people. They reduced it when everybody was trying to increase the team size. They actually reduced it to 3 to 9 people. Now, 3 to 9 people for what used to be called the development team, plus a product owner, plus a Scrum Master, will take us to 11. So it's not that far off. And so the details about the specific number, I think, are less important. The more important thing is the realization that through technical excellence, we are able to achieve more with fewer people through the tools, through the technologies and tools. And this doesn't quite scale in the same way that you would scale a factory. In factories, you can scale linearly. You can put 2 people on an assembly line or 3 people on assembly line. You can produce 3 times the amount of output. But for our work, complex, adaptive, and creative work, for creative work, it's not like that, right? So small. I think that this is an outright recognition that this is creative work, and throwing more people on it to try to scale your output is not really going to apply. This creative work like paintings or poetry or authors of bestsellers and classics, you wouldn't put more people on it to speed things up. It might even slow things down. So I think that's it says a lot, actually. I think for me, briefly, the symptom has often come from this idea of we are trying to often apply Scrum in a very hierarchical, power-driven environment in most cases. And I use the term hierarchy very loosely here. Hierarchy is not all bad always, but just in that terms of the traditional power kind of manager kind of worker kind of scenario. And when we look at the
previous Scrum Guide refer to roles, and kind of you have those specific roles, and often this caused this almost exacerbated in some cases, in my experience, things like the product owner having authority. Well, the only person who can have authority in an organization, a hierarchical organization, is someone who's pretty high up, right? And then we have some issues with regard to kind of the Scrum team concept versus this idea of, well, in our organization or most organizations, product owners need more, they need to be in authority, and then therefore that's only someone who's higher up the organization, and you have a number of issues. Now it's about accountabilities. And on one hand, I do like the accountability aspect, where rather than roles, the Scrum team, product owner, Scrum Master, and development team have accountabilities to give that unity, to give that, they succeed and fail together. So it was before more about the development team and then peripheral roles, and now it's about all the roles being accountable. But again, there's a challenge there whereby, how will that translate to traditional environments that are trying to move, for want of a better term, to more agile ways of working? And, could that even further exacerbate some of the challenges that they're going to experience, whereby, for example, the hierarchy split becomes even more polarized, and you have the people who have accountabilities or just a bunch of development team members, ultimately, developers, and they have to just try and become pseudo Scrum Masters or product owners, as well as do the work. I mean, how's that going to work out? Ideally, as coaches, one of the things we really need to help organizations understand is actually, ultimately, how can we use hierarchy where it's more about structure and perhaps, sensible governance over power and cultural kind of aspects. And this is always going to be a challenge, I think, for us. Yep, totally agreed. Thank you so much, guys. That totally makes sense. Thank you, Zia, and for responding. And I believe let's go forward with that stuff, because dear participants, we really appreciate your questions, but we are expecting the question within the scope of the Scrum Guide English. And I have one question from both of you, that how much % of the Scrum Guide is actually being used while you guys are training? I know the concepts are real, like they're pretty much same, but how much of the things, because sometimes it happens that at the end of the day, when my team come up with any query, so I have to open the Scrum Guide, because obviously whatever the notes we have taken within the training session is obviously they are relatable and have different kind of insight. But I would like to know, like as a trainer, how much you try to cope up with the knowledge that a Scrum Guide actually has. You mean within the training, within the classroom itself, or you mean in terms of, okay. Yeah, in terms of for the way you guys train the students, the way you guys actually, relates with that Scrum Guide. So for me, I tell people it is the single most important document in this course. And so the second is I refer people to the Manifesto for Agile Software Development. But the first I always say is the Scrum Guide. It is something that frees you from a lot of the other misconceptions, that are out there. And it's amazing because it is I don't know by accident or on purpose, but it is sufficiently vague in certain areas that it actually provokes thought. Why did they choose this word? Why didn't they mention this? It's not just so much what's in it, but also what's not in it, which speaks volumes. For example, a lot of questions that I get during the training is who reports to who, how do you reward people, how do you hire people, and all of these questions come in, and they're really good questions. But it's the Scrum Guide itself that provokes these questions because it doesn't answer any of these questions, right? So I think it's a very cleverly crafted document in that way, and so that's why I leverage it a lot in my training. Yeah, I mean, also same for me. I mean, I think your question, I think kind of always specifically was, how much of the guide do you teach or something along those lines? I mean, or how much of it do you kind of relate into your training? I mean, for me, it's all of it. I mean, the way we facilitate teaching with our classes, our business is the same as well. We often present Scrum as rules of the game. Well, I certainly do rules of the game and make it very easy as a set of rules to understand. I think that's the most important thing. Also, why we have these rules is also important. Why are we
playing this game. But also identifying the idea that these are rules of the game and explaining what those rules are. They are part of the learning objectives, but of course there are also generally accepted practices that will very much help organizations or people within organizations understand a little bit better how some techniques they can apply to apply these rules well. And I think we do teach those, and we don't teach those as, these are part of the rules, but they are, it's very important to make that distinction. And I think if you have guide being the single most important document and the rules being very important to apply in their entirety, but at the same time acknowledge that every organization is different, every team is different, and everyone needs to develop in their own way. I think attendees, delegates really appreciate that, and as long as we make that very explicit that those are two different things. Exactly, and I believe this is a thing, because usually what happens within the team, when you say that this is the thing we used to do like this in this scenario, in this situation, so people usually have their Scrum guide and they can easily show, okay, this is the thing which is written over here. So obviously there are certain scenarios or insights in which, we cannot exactly work like that. We have to make some kind of, compensations or some kinds of relaxations or flexibility in terms of environment. So what do you think that what we should do in such scenario when team come that it has been written over here, but we are doing like this? But whatever we are doing is correct due to this scenario or insight. My answer to that is, don't evaluate your teams based on how well they follow the Scrum Guide. All right, that is no way, and has never been a measure of team success or maturity or anything like that. I believe we should be using. There is a document, I think, which is more important than the Scrum Guide. In my classrooms, I'm teaching Scrum. So in the classroom, the Scrum Guide is very important. I have it open. I have Control F, so people can, if they have a question, I can refer them directly. It's already there. But there is a document which is more important, and I believe outside of the teaching in the classroom, the Manifesto, the Manifesto for Agile Software Development I think is a very important document. Also very cleverly crafted, very collaborative as well. And the opening statement, the opening principle, well, the opening statement is, we are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others. Uncovering means it's continuous. We haven't finished. So it doesn't matter whether you're doing Scrum or not. Scrum is not a destination, it's a starting point. And so how should you evaluating your teams? Not based on how well they're following Scrum, but I believe on the second page of the manifesto, the very first principle is, our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. And if you're doing that, hey, who's going to argue with you? Yeah, if you're making a lot of money and you have a lot of satisfied customers, you're delivering early and often, no one can say you're not doing it right? So maybe you're not doing Scrum. That's okay. Yeah. So that's all from my side, but I would like my audience to speak up, and if they have any questions, so please pour it down. We are just left with few seconds and few minutes, so please avail this opportunity with Abid and Zia, because you will be definitely getting a good insight of the Scrum guides and the relative differences in your daily examples. Just to add one thing is, try to please be specific about Scrum, because I can see a lot of questions those are not even part of Scrum. So Abid was mentioning the same thing, like the Control F on Scrum Guide and check that. So this is again, try to be very specific about Scrum thing, like what's in the new Scrum Guide related to this. Yeah. So Shah's got a good question here as well. So how do you scale and measure and velocity? Is obviously those words don't appear in the Scrum Guide, which I think says volumes in itself, the fact that it's not there, because the question is, how do you do it? And when you start to, if Scrum was to be prescriptive in these things, it would not be as universal, because every country has got its own hiring laws of how do you compensate people, how do you penalize people, how the different reporting structures, and Scrum does not get involved with that. If it was to get involved with that and thrust its host culture, let's admit it, the host culture is North American, Northwestern Europe and North America. If it was to thrust its ideas on other countries, then you wouldn't be able to use Scrum in other contexts. So this is what it doesn't say, I think, is very good.
It doesn't also talk about productivity. I know this is a concern that you have, Shah, and that's great, but Scrum doesn't answer. The question is, how do you measure productivity? And are you even interested in measuring productivity? Is that really important? Again, if you go to the manifesto, you're trying to reduce your productivity, all right? You're trying to maximize the amount of work not done. Remember, this is not a factory, right? Would you buy a painting because it has a lot of paint on it? And the painter's been very productive. Would you buy a book because it has a lot of words in it, and the author's written lots of words? It's not the output you're interested in. It's not productivity. It's the outcome. So I always use the Scrum Guide, and to understand Scrum better, I always have the manifesto there open. And I think I always say, if you want to understand how to do Scrum really well, then use the manifesto to guide some of the ideas. People ask me, what's the best length for a sprint, for example? What's the best length? Well, the answer is it depends. But if you go to the manifesto, it does explain. But we prefer shorter timescales. So it does give you some guidance and I think the two have understood quite nicely when they're looked at together. Thanks, mate. I really appreciate the way you articulated my questions. Appreciate it. All right, we have one interesting question in regards of guide that Arslan has mentioned this. Why estimates totally removed from the guide? So it's not totally removed from the guide. It does say that the product backlog must be estimated. All right. So that's a quality of the product backlog. Product backlogs must be estimated. However, Scrum does not mandate any particular technique, and it hasn't previously either. There was nothing, as far as my knowledge goes back to 2012, I don't think there was any prescription on how teams should be estimating. And every organization will be different, because sometimes people will do quarterly budgets, some people will do, now you're talking about accounting systems and stuff like that, and Scrum is not going to go there. If it was to go there, again, it would be not as applicable to as many situations and as many cultural contexts or legal contexts or accounting contexts. I mean, in the end, estimates are really trying to figure out, time and budgets and things like that. So I think it's great that Scrum doesn't go into those details. Estimates were never part of this, actually. We have a phrase in Canada where I grew up. There was a Kellogg's commercial for cornflakes, and they said the motto was Kellogg's cornflakes, try them again for the first time. Okay, so everyone knows what Kellogg's cornflakes taste like. Everyone knows, but when was the last time? It's basically go back and taste it and really taste it. So I think the Scrum Guide is the same thing. A lot of people say, "Oh, I have read that." Yeah, but I think read it again for the first time, like you've never read it before. And pretend that you just start off with no misconceptions, or no previous conceptions, rather, and just look at it from first principles again, and try to forget some of the other things that might be being taught on some of the LinkedIn courses and these sorts of things, and just see it for the first time with your own eyes. That's really important. I'm going to have to take leave, ladies and gentlemen, if that's okay. And so maybe Abid can continue. We're already closing there, so. Okay. Guys, before you close out, can I make a request for the panelists to kindly, if they don't mind sharing their email address or something, which we can use offline for future interactions, if they don't mind, of course. So I can say for myself, the best is to use LinkedIn, because I don't have to worry about GDPR. Okay. And I do endeavor to respond to all messages. Okay, I do. Yeah. But I don't know when. It goes onto a backlog. Okay, so we'll see. That's if you want, hopefully you can prioritize it soon. So Abid, which backlog? Product backlog or sprint backlog? Hey, Abid, what's your last name, brother? I spell it in a very strange way. So I'll rename myself here in my chat window, so that so that you can see how I spell it. So I'm not Abid Qureshi, the Pakistani bodybuilder, okay, and I'm not Abid Qureshi, the Supreme Court appointee from the US. Okay. Cool bean. So we will also share the links on the meetup. Other than that, that will also be shared over here. So I would like to thank everyone over here who has joined us, especially our chief guest Abid Qureshi and Zia,
who has taken a special time for us to be part of our launching ceremony. I would like Mohsen to take over and just to wrap up the session. And again, thank you, everyone. Thanks very much, Namra. And the LinkedIn details are shared on the chat. You can check that. Other than that, thank you very much for the whole team. Zia, Abid, really respected and honorable guest for us and for this community. I really appreciate your time. You joined us on this moment, and that's actually the appreciation for my whole community, the people, the volunteers who have been working and getting time through their like very tough schedules nowadays. We have Saira Sarfraz here. We have Abdul Hasib Qasim. Saira is from Karachi. Hasib is from Islamabad. Zishan from US. And we had Amir. I think he disconnected maybe. So there's a lot of people who made a lot of effort for this initiative. And I really appreciate all of you guys that you are part of our community and you are taking out time for this volunteer work. And thank you, especially Namra. She is the chapter president for Karachi and doing a remarkable job, and also being the ambassador of, there's another festival going on, and I just heard the news. So congratulations, Namra, about it. So thank you so much. Thank you so much. Thank you, guys. So stay in touch. And, I think, Namra, you can say better words for the closing remarks. And again, thank you, everyone, for joining. Thank you. Thank you so much, Mohsen, for your kind words. And again, Abid as well for appreciating the facilitation. And yes, we are coming up so far, and I would love that everyone should join our community. It's not about only to work as a volunteer, but your support would be more than enough to support us, promote us, and be part of us being a participant. That would be kind enough. And that's all. I believe we are doing good job, and that is under the leadership of Mohsen. We all as volunteer have reached so much far. Like, we are not building our jobs, we are building our careers, and thanks to Mohsen for this. I would always love to mention his name, because he has not only a leader for me, but he is he always being a brother to me. He is always a mentor for his volunteer and team, and he has that skill set which keep everyone engaged with him in moving forward in this noble cause for Pakistan. So Pakistan Zindabad. Thank you, everyone. Very much, Namra, for the kind words, and thanks again, Zishan, Abid, everyone who joined this call, and see you again, inshallah. Take care. Thanks, everyone. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.